Okay, thank you. First of all, I would like to introduce myself. Myself, Dr. Kazafi Rabbani. I am working as Associate Professor in the Department of Mathematics and Statistics. And today I will uh, discuss some basic ground of statistics, data analysis, and so on. Okay, so let us start with statistics. You know statistics? If you know statistics, then I will go forward and first discuss some basic concept of statistics with starting from first thing is data. You know what is data? Data is the nothing but collection of information, and the information in terms of either number, figure, fact, and so on. Okay, so first take some example of numeric values. Some if I write 10, this is a number. Is it information? It is data. I write here 10. Is it data? Yes or no? Yes. Anybody? No? Why? It is the number. It is number. It is information. It is only number, not information. What is 10? You will get no information from this 10. If we just write here 10 kg, now this is the information. It means there is something whose weight is 10 kg. Then you get the information. Simply 10, you will get no information. So 10 is not information, but this is whole, and we can 10 cm centimeter. This is the information. Right. Now these data are divided into two groups. First is qualitative data and second is quantitative data. I think in previous class you have already studied these things. First is qualitative data. And the quantitative data. Qualitative data means the characteristics or attributes, and this is the measurable. Quantitative means it is given in numerics value which can be measured, and the qualitative data cannot be measured, either presence or either presence or absence. You can only count its present and absence. Suppose some example of qualitative data is yes, quality and attributes. For literate, either someone is literate or illiterate, healthy, unhealthy, gender, male, female, and quantitative data that can be measured, height, weight, marks, age. Like this. So, moving on. If you are, this data can be collected by two ways. You know, first primary source of data and secondary source of data. Method of data collection already you have studied. Okay. Now, if you collected the data, these data are measured on different scale. Suppose you have collected the different types of data, like someone, you go and ask the respondent, what is your name? This is the data. Second one is his gender. This is qualification.
It is visible. Just suppose you are collecting data. What you will have? You will have the name of the respondent, gender, some qualification, and income, and their, yes, marks, and so on. Okay, this such type of data you are going to collect. Now these data, suppose Mr. the respondent will answer you Mr. his name Mr. X and YZ, gender male, qualification PG, and income low income family, marks 60 marks. Suppose you get this type of data on information. Now all these information are measured on different scale. First we have to know what is the scale of measurement. So the nature of all these data are different. I mean to say nature of these data, here this is the name, this is the gender, this is his qualification, this is income and marks. So nature of all these data are different. So this data can be measured on different scale. And what is the scale? So right here, scales of measurement. Scales of measurement. There are four types of scales of measurements. First one is nominal scale. You have to do first of all, if you have collected the data, then first thing is to define the scale of these data. So first scale is nominal scale, second is ordinal scale, third one is interval scale, and fourth one is ratio scale. Okay, all the data are measured on these four scales. Generally, if you use the SPSS, then you will get only three types of scale. In SPSS, you know SPSS software, which is used to analyze the data. First, nominal scale, ordinal scale, and these interval and ratio scale is only one in SPSS. So what is nominal? Nominal and ordinal scale are used for categorical data, means qualitative data, and these used for quantitative data. This is for qualitative, and you can also write categorical data, and these are scale data, means quantitative data. Quantitative data also in SPSS, you will see the in SPSS the interval scale and ratio scale is as a written there scale data. So scale data is nothing but a quantitative data, and categorical data are further classified into two: nominal scale and ordinal scale. Categorical data means qualitative data, that is the attributes. So nominal data is nothing which is used to just identify the something, because in statistical data, what is the difference between data and statistical data? Data is the information in terms of
numeric, fact, figure, or you can say the data is either qualitative and quantitative data. But statistical data is only quantitative data. So if you use the statistical analysis, you have all data in terms of quantity. So all these categorical data can be converted into quantity. So how to convert these categorical data into quantity? Just using their scale, scale of measurement. Suppose name, name is just Mr. X, Mr. Y is just used to identify someone. So generally uh, in statistical data or data analysis, no use of name. नाम का कोई यूज नहीं होता है वहां पे. नाम बस आप अपने आइडेंटिफिकेशन के लिए या अपने रिकॉर्ड के लिए you can use the name, but this is not applied on the analysis. Suppose gender, male, gender means either someone is male or female. So you just convert the male denoted by 1 and female, just we denote the male by 1 and female by 2. So this 1 and 2 is only used to identify the gender. If we write here gender 1 means male. At the position of gender we write 2, that is for female. So here 1 and 2, these are two numbers 1 and 2. This is only used for identify the gender. So here 1 and 2 is identity, not used as their magnitude. आप यहाँ पे 1 और 2 में ये नहीं कह सकते हैं कि 1 is better, 1 is better than 2 या 2 is more than 1. So here the mathematical expression, mathematical operation will not use in these 1 and 2. This 1 and 2 is only used for identification. इस 1 and 2 का अपना कोई इंपॉर्टेंस नहीं है. इट इज क्लियर. 1 2 ये नहीं आप कह सकते हैं कि 2 है तो 2 इज बेटर देन 1, 2 इज मोर देन 1, क्योंकि 2 बड़ा होता है. तो आप ये नहीं कह सकते 2 इज ग्रेटर देन 1. जो इंपॉर्टेंस व्हाट 2 का होगा वही इंपॉर्टेंस 1 का होगा. 1 and 2 हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं टू आइडेंटिफाई द जेंडर. So this 1 and 2 are measured on, this is 1 2 is nothing but nominal scale, right? So nominal scale is used only to identify the variables. Next is ordinal. So here male, तो यहाँ पे gender can be measured on nominal scale. Is clear? And और कोई एग्जांपल आप बताएं nominal scale. You see the jersey of the player. प्लेयर के जर्सी पे देखते हैं उनके नंबर होते हैं. नंबर प्लेट ऑन द मोटर व्हीकल, नंबर प्लेट होते हैं. हाउस नंबर, ऑल आर नॉमिनल स्केल. जो वैल्यूज हैं वो नॉमिनल स्केल के हैं. क्लियर. तो नॉमिनल स्केल के जो एग्जांपल हो गए आपको नंबर प्लेट, हाउस नंबर, रोल नंबर, these are nominal scale. ये सब जो होते हैं this is used only to identify. तो नॉमिनल स्केल में क्या होता है, सिर्फ आइडेंटिफिकेशन होता है and nothing. Next is ordinal scale. Ordinal means order, ranking. Suppose here we have one more example, PG.
if you ask the qualification to the respondent, then the respondent have some option like 10th, 12th, graduation, PG and PhD. If the respondent have these option, he has to tick one of them. So suppose the respondent has PG qualification, okay. Now these can be written as, suppose अब इन ये भी क्या, ये कैटेगरी है, क्लासिफिकेशन है क्वालिफिकेशन की, तो अब इसको भी हम क्या करेंगे, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव जस्ट give the values number. Suppose just we represent 10th by 1, 12th by 2, graduation. This is the representation, represent the 3. This is 4 and 5. 1 for 10th class, 2 for 12th class means senior secondary, graduation represented by 3, PG represented by 4, and this is 5. Now the choice of the respondent will be either 1, 2, 3, 4, 5. But here 3 means 3 identify the graduation, 2 identify the 12th level, 5 represent identification of PhD, right? But here this is, so this is what, this is the identification. But one more thing, here graduation means his qualification is much more than 10th and 12th and less than PG. So here identification and magnitude means you can say 2 better than 1, 4 greater than 3, greater than 2, greater than 1. You can write this. Means 4 is better than 3, better than 2, better than 1. तो यहाँ पे दो चीजें हैं, आइडेंटिफिकेशन एज वेल एज मैग्नीट्यूड ऑफ द नंबर. तो यहाँ पर ये आपको नहीं लग रहा है ये ऑर्डरिंग, दिस इज रैंकिंग. So this type of data can be measured on ordinal scale. ठीक है, जहां पर रैंकिंग, बहुत सारे एग्जांपल हैं. आपको ये भी एग्जांपल हमने लिखा था, इनकम, इनकम ऑफ द फैमिली, लो इनकम फैमिली, मिडिल इनकम फैमिली एंड हाई इनकम फैमिली. तो सपोज लो इनकम फैमिली, middle income family and high income family. There are 3 category of the income. So you can also you have to convert all the data into statistical data. So you have to give the number. Statistical data always having the numeric values. So just low income family is represented by 1 or denoted by 1, middle income family by 2 and high income family 3. अब यहाँ पे क्या होगा कि 1 क्या है, रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, लो इनकम फैमिली, एंड 1 इज लोएस्ट वैल्यू. 2 रिप्रेजेंट द मिडिल इनकम फैमिली एंड 2 इज बेटर देन 1 एंड लेस देन 3. यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन भी है एंड देयर मैग्नीट्यूड. 1 इज बेटर रैंकिंग. So here 1, 2, 3 is identification and as well as arranged in ranking. Arranged in either increasing order or decreasing order. तो यहाँ पे दो चीजें यूज हो रही हैं, आइडेंटिफिकेशन एंड मैग्नीट्यूड. Is it clear?
देखिए नॉमिनल में क्या था, 1 एंड 2 सिर्फ आइडेंटिटी था। जो इम्पोर्टेंस 1 का है सेम इम्पोर्टेंस फॉर नंबर 2, बट इन दिस केस this is identity as well as magnitude. One is less important than two here or here also. High income family means it is better than low and middle income family. तो यहाँ पर identity भी है and magnitude भी है. This type of data can be measured on ordinal scale. तो ये दोनों डेटा किस तरह के होते हैं, कैटेगरिकल डेटा होते हैं, क्वालिटेटिव डेटा हैं. Now the third one is interval scale. देखिए इंटरवल एंड रेशियो स्केल आर ऑलमोस्ट सेम, बस द डिफरेंस इज ओनली वन डिफरेंस आई नो. व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस इन बोथ द cases? Only the difference is zero. What is the importance of zero? Zero means there is something or there is nothing. If zero means there is something, that is interval scale. If zero means nothing, that will come into ratio scale. For example, zero temperature. If you have example of zero temperature, means there is temperature or no temperature. There is temperature. So if you are calculating temperature, then the data come under interval scale, right? And the ratio is where you can apply all the mathematical operation. देखिए इसमें इन दोनों में क्या कर सकते हैं हम, ये 1 और 2 को हम ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते. यहाँ पे भी मैथमेटिकल ऑपरेशन अप्लाई नहीं कर सकते हैं, ना ऐड कर सकते हैं. अगर हम कोई भी मैथमेटिक यानी कि दो नंबर को हम ऐड कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, वो किस केस में कर सकते हैं, रेशियो स्केल में. तो रेशियो स्केल का एग्जाम देखिए, इनका एग्जाम्पल तो हो गया टेम्परेचर, और इनका एग्जाम्पल मान लीजिए आपके मार्क्स, हाइट, weight. Suppose 60 kg weight and some 50 kg weight, you can add, you can multiply. So all the mathematical operation can be applied on ratio scale. So in SPSS, if you are using SPSS, then all these two, interval and ratio, is written as scale data. So in SPSS, the data can be measured on three: nominal, ordinal and scale data in SPSS. SPSS में तीन ही हैं, नॉमिनल, ऑर्डिनल एंड स्केल. स्केल में ही ये दोनों आ जाएंगे, इंटरवल एंड रेशियो. इंटरवल और रेशियो में कोई डिफरेंस नहीं है ज्यादा, बस 1 टेम्परेचर का ही एक डिफरेंस आता है. या कोई भी आप बल्ब, वो वोल्ट भी होता है, 0 वाट, तो वो भी आ जाएगा इंटरवल में. ओके, इज इट क्लियर or any confusion? So this is most important thing. If you are using the data, collecting the data, first of all to measure, to identify the data can be measured on which scale. अगर आप इसमें गलती करेंगे तो आपकी एनालिसिस सही नहीं हो पाएगी. और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो भी आप डेटा कलेक्ट करें, जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर रिटन इन दिस स्केल. जो भी आप डेटा, कोई भी आप डेटा लें, देखिए इसी स्केल पे आएंगे, और इस स्केल पर जब डेटा आएंगे उसके बाद ही आप फर्दर स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दीज स्केल. तो जो भी हम फर्दर वो स्टैटिस्टिकल टूल अप्लाई करेंगे, तो टूल विल किस बेस पे, इस स्केल के बेस पे हम वो यूज करेंगे कि हमारा डेटा कौन सा नॉमिनल स्केल है
तो कौन सा स्टैटिकल टूल यूज होगा? मीन, मीडियन, मॉड, यू ऑल नो. मीन, मीडियन, मॉड ऑल आर यूज टू फाइंड द एवरेज. सभी से एवरेज फाइंड करते हैं. बट ऑल these three method are used in different scale. जहाँ पे हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, कहाँ पे हम मीडियन निकालेंगे, कहाँ पे हम मॉड निकालेंगे, वो किस पे डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन द स्केल, कि डेटा किस स्केल पे है. कोई कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन in the scale of measurement? Now the second thing is classification of data. Yes. Classification of data. If you collect the data, it means you have the raw data. जो भी डेटा आप कलेक्ट करते हैं वो रॉ डेटा होता है. उसमें काफ़ी आउटलायर्स भी हो सकते हैं, मिस इन्फॉर्मेशन भी हो सकते हैं. तो अब उन डेटा को क्या करते हैं, इस उस डेटा को की फिल्टरिंग करते हैं, या उस डेटा को आप ऑर्गेनाइज करते हैं, अरेंज करते हैं इन सच ए वे टू गेट द मोर एक्यूरेट इंफॉर्मेशन. जो भी आपके पास रॉ डेटा है उसको क्या करते हैं, पहले उसको अरेंज करते हैं, मॉडिफाई करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं. तो उसी प्रोसेस में हम क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ डेटा. क्लासिफिकेशन डेटा के भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लास होते हैं. फर्स्ट क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन मीन बेस्ड ऑन region based. So first is geographical classification. This is the type of classification of data, geographical classification. This classification is based on region and location, based on region, geographical region. Second one is chronological classification. Chronological classification. This is based on time, on the basis of time. ग्राफिकल क्लासिफिकेशन को क्रॉस सेक्शनल क्लासिफिकेशन भी कहते हैं, क्रॉस सेक्शनल क्लासिफिकेशन. एंड क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन भी कहते हैं. ठीक है, तो चाहे तो नोट कर लें. दिस इज क्रॉस सेक्शनल क्लासिफिकेशन, टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन. सेकेंड इज क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन. ठीक है, ऑडिबल नहीं है तो आप पूछ लें, मैं वो डिक्टेट कर दूंगा. मेरी हैंडराइटिंग पे मत जाइएगा, आप लोग पूछ लीजिएगा इसको. क्वालिटेटिव डेटा बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट्स
based on attributes and quantitative classification based on measurement या number. These are four types of classification which is used to classify the raw data: geographical classification, chronological classification, qualitative classification and quantitative classification. हम इसके एक एक एग्जांपल आपको दे दूं. Suppose you have the data and data can be classified and can be written as this table. Suppose region and sale. Region, north region, south, east and west. We have divided the entire region into four: north region, south region, and the number of sale. Suppose 1200, 1500, 1000, 1600. This is the number of sale of some particular item here. तो देखिए ये जो सेल का डिस्ट्रीब्यूशन है, दिस कैन हैज बीन अरेंज बाय रीजन वाइज. नॉर्थ में कितने सेल हुए, नॉर्थ रीजन में टोटल नंबर ऑफ सेल, साउथ में टोटल नंबर ऑफ सेल, ईस्ट में जो टोटल सेल हैं, इस सेल टोटल सेल्स को जो अरेंज किया गया है वो रीजन वाइज. या कुछ और एग्जांपल आप ले सकते हैं. ठीक है, तो ये रीजन वाइज, तो ये इस क्लासिफिकेशन, कौन सा क्लासिफिकेशन हुआ, बेस्ड ऑन रीजन मीन्स जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन. द इंटायर सेल, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल है, इसको किस तरह से आपने अरेंज किया है, रीजन वाइज. या दूसरा एग्जांपल आप लीजिए, पॉपुलेशन. सपोज सेकंड एग्जांपल आपने लिया स्टेट एंड हियर इज पॉपुलेशन. सपोज यूपी, दिल्ली, MP and West Bengal. This is the population 17 in crore में, Delhi 10, 15 and 12. This is the population. So the data is collected, the population state wise. Again this is given in region, geographical region. So this is the classification of entire population. ठीक है, क्लासिफिकेशन जब पॉपुलेशन को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया वो बेस्ड ऑन स्टेट, रीजन वाइज. So this is the example of geographical classification. Is it visible? Last. पीछे दिख रहा है? नहीं दिख रहा तो आगे आ जाएं आप. The second example, chronological classification. का एग्जाम्पल किस तरह होगा? टेक एग्जाम्पल ईयर. And production of wheat, year wise production. अब यहाँ पर हमने ईयर लिया 2021,
20, 2021, 2022, 2023, 24, and the production is 15 ton, 10 ton, टन्स में दिया हुए हैं, 12, 18, 16। अब यहाँ पर जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन, ये डिफरेंट ईयर में हमने अरेंज किया है। तो प्रोडक्शन को जो अरेंज किया है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ईयर वाइज, इस तक अरेंजमेंट दिस इज बेस्ड ऑन क्रोनोलॉजिकल, ठीक है। ये डिफरेंट टाइम पर है। इससे पहले वाला जो एग्जांपल था वो सेम पॉइंट ऑफ टाइम, एक ही टाइम पे डिफरेंट स्टेट का पॉपुलेशन, एक ही टाइम पे डिफरेंट रीजन का सेल। यहाँ पर टाइम क्या, टाइम वेरी कर रहा है, डिफरेंट टाइम, 20 में 21, 22, 23, तो डिफरेंट टाइम पे प्रोडक्शन क्या है या डिफरेंट टाइम पर पॉपुलेशन क्या है किसी स्टेट का। तो अगर डेटा को आप इस तरह से अरेंज कर रहे हैं, दिस इज क्लासिफिकेशन कौन सा हो जाएगा, टाइम सीरीज क्लासिफिकेशन और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्लियर? ये एग्जांपल हो गया आपका इसका, टाइम सीरीज और क्रोनोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। The third one is qualitative classification. Qualitative classification means qualitative means क्या, categorical data. If you have the attributes and the classification just give the different groups. So in qualitative classification there are two types of qualitative classification, simple classification and manifold classification. First is simple classification. Simple classification, this is the example of qualitative. Qualitative again can be divided into two parts. First is simple classification. Simple classification means suppose we have population. Population can be classified into male population and female population. See, this is the simple classification. एक ही क्लासिफिकेशन क्या है, सिंपल मीन्स वन डेटा कैन बी डिवाइडेड इनटू वन टाइम। फर्स्ट क्लासिफिकेशन, टोटल हमारे पास क्या पॉपुलेशन है, इस पॉपुलेशन को हमने सिर्फ मेल और फीमेल में वन टाइम कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो गया सिंपल क्लासिफिकेशन। सिर्फ एक ही क्लासिफिकेशन क्या, सिंपल का मतलब ओनली वन क्लासिफिकेशन, माने वन डिस्ट्रीब्यूशन या वन डिवीजन कर सकते हैं, वन ग्रुप। फिर इसी क्वालिटेटिव सेकंड क्या है, मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन ये किसका, क्वालिटेटिव की बात कर रहे हैं। मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन, अब इसी सिंपल क्लासिफिकेशन को और आप क्लासिफाई कर दें, जैसे पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू मेल एंड फीमेल, अगेन वी कन्वर्ट डिवाइड द मेल employed and unemployed, female also employed and unemployed। ठीक है, अब ये मैनीफोल्ड हो गया। और भी आप कर सकते हैं। अब मैनीफोल्ड का मतलब जितने भी इसको आप डिवाइड करते चले, आगे आप बाइफर्केट करते चले जाएं।
2 3 कुछ भी। अनएम्प्लॉयड को आप और कर दें, लिटरेट या स्मोकर, नॉन स्मोकर, फिर इसी तरह इसको स्मोकर, नॉन स्मोकर। ठीक है, तो ये जितने आप इसको बाइफरकेट करेंगे, दैट इज द मैनीफोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। आर यू गेटिंग व्हाट व्हाट इज द प्रॉब्लम? Simple. Simple. If we just divide one whole population into two parts, male and female, and end, no further classification is required. That is the simple. If you again classify further, that is manifold. Clear? Simple means just population, male and female. If again and again, that is manifold. If you one fold and manifold. One fold means simple. Clear? Now the last is quantitative classification. Quantitative classification can also be divided into two parts. First is discrete and second is continuous. Quantitative classification also divided into two parts. One is discrete qualification, discrete data qualification, and second is continuous data qualification. Sorry, classification. So first is discrete. You know discrete data, individual values, raw data जो होता है वो discrete होता है. कंटिन्यूअस अगर उसको आप अरेंज करते हैं फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में तो वो हो जाता है कॉन्टिन्यूअस. एग्जाम्पल, सपोज discrete, you can suppose we have height example. We take the second example. Suppose marks and number of students. This is marks and number of students. If you take the discrete value of marks, suppose 6, 10, 12, 15 and 20. This is the marks. And here the number of students, 5. 5 students who got the marks 6. 3 students who got the marks 10. 4 students got the marks 12. 1 student got the marks 15. 2 students got the marks 20. So this is the discrete values of marks. ये discrete values हैं और इनका क्या ये फ्रीक्वेंसी है. तो डिस्क्रीट की फ्रीक्वेंसी लिया डिस्क्रीट केस में तो डिस्क्रीट डेटा क्लासिफिकेशन. अगर डेटा आपका रॉ डेटा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी अगर अकाउंट करके आप अरेंज कर रहे हैं तो वो डिस्क्रीट डेटा क्लासिफिकेशन.
कंटिन्यूअस में क्या होगा, इसी में यहाँ पर कंटिन्यूअस डेटा क्लासिफिकेशन. If you write marks again and number of students, marks and student, if you take the marks like this 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, and here number of students 2, 4, 7, 5, 2, like this. So this is the continuous classification of data. कंटिन्यूअस क्यों किया कि ये मार्क्स को हमने क्या कर दिया, कंटिन्यूअस फॉर्म में कर दिया. यहाँ मार्क्स क्या है, इंडिविजुअल है. इसको हमने जैसे दे आर 2 स्टूडेंट्स हु गॉट द मार्क्स बिटवीन 0 to 10. 0 से 10 के बीच में जो नंबर मार्क्स, कितने स्टूडेंट्स हैं, 2 स्टूडेंट्स. दे आर 4 स्टूडेंट्स हु गॉट द मार्क्स बिटवीन 10 to 20. राइट. तो अगर इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो दिस इज द क्लासिफिकेशन, क्वांटिटेटिव डेटा का क्लासिफिकेशन है. बट इन केस ऑफ कंटिन्यूअस अगर इस फॉर्म में लिख रहे हैं तो ये डिस्क्रीट है. तो दोनों में डिफरेंस ही है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस. डिस्क्रीट आपका रॉ डेटा होता है. कंटिन्यूअस देखिए, डिस्क्रीट में इंडिविजुअल वैल्यूज होती है, कंटिन्यूअस में क्या होता है, ये इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं. 0 से 10 के बीच में इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं. लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डिस्क्रीट में एक सिंगल नंबर होंगे. ये डिफरेंस है. इज इट क्लियर? एनी प्रॉब्लम, एनी क्वेरी? Continuous, it is continuous is infinite. You take infinite values between 0 to 10. How many values in between 0 to 10? Yes, but here is the single values 6. And one you have already studied the discrete variable and continuous variable. यहाँ पे हम वैल्यूज की बात कर रहे हैं. वेरिएबल आपने पढ़ा होगा, डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस वेरिएबल. डिस्क्रीट वेरिएबल जिसको आप काउंट कर सकते हैं, कंटिन्यूअस वेरिएबल दैट कैन बी मेजर्ड. जो मेजरेबल वेरिएबल है वो कंटिन्यूअस वेरिएबल होते हैं. यस, क्लोज्ड इंटरवल एंड ओपन इंटरवल. दिस इज द closed no, if we write here more than 40 or less than 10, this is the open. But here we have minimum value 0, this is the closed interval. If we write here less than 10 and more than 40, this is open. Yes. And one more thing I would like to discuss here. If we write 0 to 10 and here 40 to 50, here you see 10, values 10 is here and here also. If the one student whose marks is 10, कोई स्टूडेंट है उनके मार्क्स 10 हैं, तो in which class they will lie, first or second? If someone marks is 10, in which class that student will lie, first or second? Mixed reaction. Second. It will be second. Yes, right is second. Why? 0 to 10 means from 0 to less than 10. 0 to 10 means 0 to less than 10.
10 to 20, from 10. 10 is included here. From 10 to less than 20, not 20. This class interval is known as exclusive class interval. This type of class interval is known as exclusive class interval. If we write, the second one is inclusive class interval. Inclusive class interval means you can write 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, like this. This is the inclusive class interval. In means the upper limit is included. But the problem, this is in exclusive, this is inclusive. The problem and demerit for this is, this classification is that if someone got 9.5 marks, what will happen? अगर किसी ने 9.5 मार्क्स ऑब्टेन किया, आ सकता है, अब क्या होगा? तो दिस इज द डिमेरिट ऑफ इंक्लूसिव क्लास इंटरवल. तो इस केस में हम क्या करते हैं, वो आप एक थ्योरी है, हमने कि 0.5 यहाँ ऐड कर देते हैं प्लस 0.5 और इसमें से माइनस 0.5 सब्ट्रैक्ट कर दें, देन दिस बिकम द exclusive class interval. So that is why this class interval is more acceptable than this. तो अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो बेटर है कि आप ये यूज कर रहे हैं. क्लियर? ओके. Now the next topic, come to the next topic. After classification, we move for presentation of data. Presentation of data. Actually, the definition of statistics is based on, if you define the statistics mean it is the based on, and it is the composition of collection of data, classification of data, presentation of data, interpretation of data, analysis of data. So I have skipped the first one, collection of data. You have already studied the collection of data, how to collect the data. So we skip the collection of data, we start classification of data and all classification, and now next is presentation of data. How to present the data? If you have the data, how to represent, how to present. So there are again different method to represent our data. First is textual form, in written paragraph. अगर कोई आप इंफॉर्मेशन इन रिटन या पैराग्राफ के फॉर्म में दे रहे हैं, दैट इज द टेक्स्ट फॉर्म. दिस इज आउट. सेकेंड इज टेबुलर फॉर्म. टेबुलर फॉर्म. थर्ड इज ग्राफिकल फॉर्म. टेक्स्ट तो हो गया क्लियर, जो भी आपको रिटन में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, दैट इज द टेक्स्ट. सेकेंड इज टेबुलर फॉर्म. ऑल दीज डेटा जो क्लासिफिकेशन में, ये जो इस फॉर्म में अगर डेटा टेबल के फॉर्म में डेटा प्रेजेंट कर रहे हैं, दैट इज द टेबुलर फॉर्म. तो नो नीड टू गिव एनी एग्जांपल फॉर टेबुलर फॉर्म. ठीक है, कोई भी आप टेबल के फॉर्म में अपने टेबल बनाया, इधर मार्क्स लिखे, इधर स्टूडेंट लिखे, या आपने इस तरह से एक एग्जांपल दे ही दे रहा हूँ.
सपोज आपने लिखा पॉपुलेशन, यहाँ पे लिखा आपने मेल, यहाँ पे लिखा फीमेल, ठीक है, यहाँ पे उनका इनकम लिखा आपने। इस तरह से अगर आपने कोई डेटा पॉपुलेशन नहीं, यहाँ पर आप लिखें स्टेट, स्टेट देन पॉपुलेशन, ठीक है। कोई इस तरह से टेबल आपने डिफरेंट टेबल बना दिया, रो एंड कॉलम। तो ये टेबलर फॉर्म हो गया। दूसरा ग्राफिकल फॉर्म, कम टू द ग्राफिकल फॉर्म, राइट। मैट्रिक्स फॉर्म भी होता है लेकिन हम स्किप कर रहे हैं उसे। ग्राफिकल फॉर्म, how to represent in graph? You know what type of graph? There are different types of graph. First is bar chart, second is histogram, थर्ड इज, बहुत सारे हैं लेकिन हम जो मेन है उसी को हम मेंशन कर रहे हैं, हिस्टोग्राम एंड पाई चार्ट। ये तीन बेस, ये थ्री इंपॉर्टेंट ग्राफ हैं। वैसे सो मेनी ग्राफ है देयर। देखिए बार चार्ट, अब कब हम बार चार्ट यूज करेंगे, हिस्टोग्राम यूज करेंगे एंड पाई चार्ट यूज करेंगे। इफ यू हैव द ऑर्डिनल डेटा, ऑर्डिनल स्केल, अगर कोई भी डेटा ऑर्डिनल स्केल पे है तो यूज करें बार डायग्राम। रेशियो स्केल पे या कंटिन्यूअस वेरिएबल है या कंटिन्यूअस डेटा है तो वहां पर हिस्टोग्राम यूज होता है। पाई चार्ट, अगर आपके पास कोई अमाउंट है, डेटा है और उसको आप बाइफरकेट कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, देन यूज पाई चार्ट, यानी कि ब्रेकअप इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो अगर ऑर्डिनल स्केल पे डेटा है तो ऑलवेज यूज, सॉरी ऑर्डिनल नहीं, अरे ये गलत, सॉरी सॉरी, दिस इज नॉट ऑर्डिनल, दिस इज द nominal scale. If the data measured on nominal scale, then you have to use bar diagram. If the histogram, if the data is continuous, then use histogram. If the data is bifurcate, if you want to break the data in different groups, then use pie chart.
Suppose example, you have state and population. UP, Delhi, you have four states, UP, Delhi, Haryana and Madhya Pradesh, and their population. ये डेटा कौन सा है? देखिए ये आप डेटा कहाँ से ले रहे हैं? स्टेट के हैं। तो स्टेट क्या है? स्टेट को मेजर किस पे करेंगे? नॉमिनल स्केल। तो यहाँ पे यूज करेंगे बार डायग्राम, बार चार्ट। किस तरह से बनाते हैं ये यू ऑलरेडी नो। टेक एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे आप स्टेट लें एंड वाई एक्सिस पे पॉपुलेशन। ठीक है, अब इनको आप या तो चलिए यहाँ पे आप यूपी, दिल्ली, टेक स्टेट एक्स एक्सिस एंड पॉपुलेशन ऑन वाई एक्सिस। स्केलिंग कर दिया हमने 5, 10, 15 एंड 20। द पॉपुलेशन ऑफ यूपी 17 मीन्स 17 is after 15 and in between 15 and 20. Just draw the line. Delhi 15, तो ये आ जाएगा 10, 12। तो इस तरह से ये बार डायग्राम आप यूज कर सकते हैं फॉर नॉमिनल स्केल। दिस इज बार डायग्राम। What is the difference between line diagram and bar diagram? This one is bar diagram. Is it clear? Clear है ये? If you take just connect all these, right, and delete and this one, now you can say line diagram. It's clear? अगर आपको इसमें तो लाइन डायग्राम में क्या आपको देखना है कि यूपी से दिल्ली की तरफ क्या हो रहा है? डाउनवर्ड्स पॉपुलेशन डिक्रीज कर रहा है, देन अगेन डिक्रीज, देन इंक्रीज। तो दिस डायग्राम इज लाइन डायग्राम। आप नोट कर लें, दिस इज द लाइन डायग्राम। नाउ सेकेंड इज इट क्लियर? लाइन डायग्राम एंड बार डायग्राम। अब देखिए बार डायग्राम में कभी हम यहाँ पे एक सिंगल लाइन लेते हैं बार डायग्राम। आप जब कुछ बुक्स या बुक्स और उस पर देखेंगे तो हो सकता है ये मोटी ऐसी लाइन हो। ठीक है, तो ये इससे कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि ये कहाँ पे बेस कर रहा है? ये यूपी, इस पॉइंट पर। यूपी का जो कोई एक ही पॉइंट होगा ना, वही पॉइंट पर। तो आप थिन लें या उसको ज़्यादा उसके विड्थ को बढ़ा दें तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो बुक्स में हो सकता है कि आपको इस तरह का डायग्राम कि इस तरह के इस शेप में मिले, लेकिन ये बार डायग्राम ही होगा। या तो सिंगल लाइन ले या मोटी सी लाइन ले, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वन इज हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ऑलवेज यूज्ड फॉर continuous data. Suppose we take here marks and students 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 and 30 to 40. Now our variable is marks and which is given in continuous.
कंटिन्यूअस फॉर्म, ठीक है, कंटिन्यूअस में दिया हुआ है, ये वैल्यू हम एज इट इज लेते हैं, चलिए ठीक। नाउ ड्रॉ करें यहाँ पे, एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे, मार्क्स, एंड वाई एक्सिस frequency, number of student. Suppose we take 0, 10, 20, 30 and 40. 0 to 10 number of student is 17. चलिए कुछ डेटा हम चेंज कर देते हैं ताकि आप 0 to 10 17, तो 5, 10, 15, 20, 25, 17 is someone here. Now take from 0 to 10, the frequency or number of student, take on y axis, 10 to 20, 15, this is the 15, again 25, 25 and 10. चलिए इसकी वैल्यू 15 की जगह हम 20 कर देते हैं, थोड़ा और अच्छा लगेगा, खूबसूरत। अगर इसको 20 कर दें, इट विल कम फ्रॉम, दिस इज नथिंग बट हिस्टोग्राम। 0 to 10 the frequency is 17, 10 to 20 frequency is 20, 20 to 30 frequency means number of student 25, and 30 to 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट 10। तो ये हिस्टोग्राम है। देखिए अब यहाँ पे हमने बार नहीं लिया, यहाँ पे हमने पूरा रेंज लिया है, फ्रॉम 0 to 10, 10 to 20। तो ये हिस्टोग्राम है विच इज यूज्ड फॉर कंटिन्यूअस वेरिएबल, कंटिन्यूअस डेटा। One more thing, if you connect the midpoint of all these, ठीक है, अगर आप कनेक्ट रफली ऐसा आपने कनेक्ट कर दिया फ्री हैंड मेथड, तो दिस इज नोन एज फ्रीक्वेंसी कर्व। इट इज फ्रीक्वेंसी कर्व। देन व्हाट इज फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन? What is the difference between frequency curve and frequency polygon? If you connect the midpoint of the class interval by freehand method, just roughly, so this is the frequency curve. If you connect by straight line, this is from this point to this point connected by straight line. This is a straight line. This is a straight line. If you connect with a straight line, then this is frequency polygon. तो फ्रीक्वेंसी कर्व और फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में बस वही डिफरेंस है कि रफ फ्री हैंड आप कनेक्ट कर दें या स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करें। स्ट्रेट लाइन से यू कनेक्ट करेंगे देन यू विल आल्सो एस्टिमेट सम फ्यूचर वैल्यूज, या आप मेजर कर सकते हैं। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन इंपॉर्टेंट है विथ कंपेरेटिवली टू फ्रीक्वेंसी कर्व। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में आप एस्टिमेट कर सकते हैं वैल्यू if you connect these midpoint of the class interval by straight line. स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या वैल्यू होगी। यू कैन फाइंड द वैल्यू एट एनी पॉइंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, बट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर फ्रीक्वेंसी कर्व।
So this is the histogram. It's clear. Now next is pie chart. Take an example of pie chart. Suppose you have expenditure of your amount, expenditures and particulars. आपने अपने अमाउंट को कहाँ कहाँ एक्सपेंड किया. सपोज ट्यूशन ट्यूशन फी 2000 rupees in tuition fee. Fooding 3000. And miscellaneous 2200. Right. बहुत छोटा एग्जांपल है, सिंपल एग्जांपल. मीन्स यू व्हाट इज योर टोटल अमाउंट. जो आपके पास टोटल अमाउंट्स हैं उसको आपने इस तरह से एक्सपेंडिचर किया, एक्सपेंड किया. 2000 फॉर ट्यूशन फी, फूडिंग 3000 and miscellaneous 2200 rupees. Means you have expend total 7200. Okay, total amount 7200 is break up into three group, three sections. Now the pie chart is presented by 360 circle, 360 degree. इसको आप या तो डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और परसेंटेज में. इट इज अप टू यू कि आप इसको परसेंट में So first we want to convert it into degree. So how to convert it into degree? This is given in rupees. So first total, you have to convert in degree. So take for first 2000 divided by total 7200 multiplied by 360. If you convert into degree, you have to multiply by 360. If you want to convert it into percentage, then you have to multiply it by 100. What will be the value of this? Similarly, 3000 divided by total multiplied by 360. Anybody? What is the value of this? ये कितना होगा? 10, 15. इसका 10, this is 15. This is 100. Here, this is 150, 110. If you add, this will be
360. इसको ऐड करें 100, 150 and 110. Total will be 360. Okay, now you just draw a circle. क्या करेंगे आप? एक सर्कल लें. From the center, take a radius, right? And now draw the angle. कैसे एंगल ड्रॉ करेंगे? यू ऑलरेडी नो. तो कितने के एंगल लेना है? 100 डिग्री. तो यहां से आप 100 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें. ख्याल से यहां से 100 होगा लाइक दिस. दिस इज 100 डिग्री. नॉट एग्जैक्ट बट अप्रोक्सीमेट लाइक दिस. ओके. तो दिस एरिया showed you the tuition fee, expenditure on tuition fee. Next, take from this base, sorry, tuition fee. From this base you have to again draw angle 150. So it will be कुछ इस तरह होगा. अरे वो आप देख लेंगे. This is suppose 150. So this area represent the expenditure on fooding. अब इसको आप रंगीन कर सकते हैं, कलर्ड. आप देखोगे. And the remaining will be automatically 110. ठीक है. Because all the circle having 360 angle. So this is presentation of pie chart. इस पाई चार्ट से ये आपको एरिया से पता चल जाएगा कि कितना किस जैसे प्रेजेंटेशन है, और आपने देखा भी होगा इस तरह से प्रेजेंटेशन. इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू परसेंटेज, तब यहाँ क्या होगा? आप जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो परसेंटेज में आ जाएगा. स्विच ऑफ रखिए. ओके. इज इट क्लियर और एनी कंफ्यूजन? नो कंफ्यूजन. more study more confusion, and no study no confusion. Okay, good. Now come to the next component, that is the analysis of data. Analysis of data, this is based on various methods. First you have to find the summary, that is based on descriptive statistics. Then you have go to for testing part, that is the hypothesis of testing. Okay. So first we will take here only descriptive part of the analysis. It is how to summarize the data in different form. Means descriptive statistics. Descriptive statistics means how to summarize the data. And for
descriptive statistics, we first discuss the method. What method? Measures of central tendency, or you can say measures of location. Measures of central tendency and measures of locations. What is the measures of central tendency? Central tendency means no central, which tends to center. If you have a collection of set of data, then which one tends to center? Just to find a central value of a set of data. That central value will represent all the observation, all the set of data. If you have set of data, then first thing is to find the central value of that data. This central value will represent the entire data. अपने क्लास में किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाना है तो क्या करेंगे? अपने क्लास से एक रिप्रेजेंटेटिव को ढूंढ अपनी क्लास से ही एक रिप्रेजेंटेटिव को आप नॉमिनेट करेंगे। अब वो रिप्रेजेंटेटिव जो होगा दैट विल रिप्रेजेंट इंटायर क्लास। ठीक है, तो सेम थिंग यहाँ पे हो रहा है कि आपके पास बहुत सारे डेटा हैं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन है। क्योंकि होता क्या है कि जो डेटा होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, वेरी करते रहते हैं। बहुत सारे उसमें आप एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते हैं। यू कैन नॉट फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू, यू कैन नॉट आंसर द एग्जैक्ट वैल्यू। इफ आई आस्क what is the time you will take to go from here to your hostel, your home, what will be your answer? कितने मिनट लगते हैं यहाँ से आपको कॉलेज से आपको घर तक जाने में? यू कैन नॉट से एग्जैक्ट आंसर। आप एग्जैक्ट आंसर दे ही नहीं सकते हैं। अगर आप 30 मिनट कहते हैं तो दैट इज द अप्रोक्सीमेट 30, नॉट एग्जैक्ट 30। इट मीन्स सम टाइम you will take more than 30, sometimes you will take less than 30. So there is no exact value. So this is the variable. So you have to, why you say 30, this is the central value and which repeat maximum time. That is why you will say the 30 minutes. ठीक है, कभी 30 से ज्यादा भी लगेगा, कभी 30 से कम भी। तो 30 क्या सेंटर की वैल्यू है, वही 30 जो आपने आंसर दिया है वही चीज हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, विच इज यू ऑलरेडी नो। आप जान रहे हैं कि कोई भी डेटा है तो उससे आप एक सेंटर की वैल्यू फाइंड करते हैं। ठीक है, बीच की वैल्यू। तो दैट इज द सेंट्रल टेंडेंसी। टू फाइंड द, कैसे डिफाइन करेंगे? हाउ टू डिफाइन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी? वैल्यू विच इज फाउंड टू फाइंड द center value from a set of data and that value represent the entire data. So this is also known as, this value is representative and average. In statistics you can say the average value, central value. So we will use to find this average value. अब एवरेज कैसे फाइंड करेंगे? व्हाट इज द मेथड फॉर फाइंडिंग द एवरेज वैल्यू? क्लियर है? एवरेज वैल्यू कहाँ से आएगा? सेंटर से आएगा। लेकिन कैसे सेंटर से आप फाइंड करेंगे, कैसे कलेक्ट करेंगे, कैसे नॉमिनेट करेंगे, चूज करेंगे? व्हाट इज द मेथोडोलॉजी? तो यू हैव टू यूज द डिफरेंट मेजर्स। हाउ टू मेजर दीज सेंट्रल वैल्यू? So there are different measures and these measures are known. First one is mean, means arithmetic mean. Second one is median. Third one is mode. Fourth one is geometric mean. Fifth one is harmonic mean. So all these are used to find the average. Weighted. The weighted mean is the actually properties of the arithmetic mean.
I come one by one. First, we will discuss arithmetic mean, then median, then mode. Okay. So keep questions. What is arithmetic mean? अब देखिए क्वेश्चन है कि ये जो इतने हैं ऑल आर यूज टू फाइंड द एवरेज। एवरेज ही फाइंड करना है तो एक ही क्यों नहीं है, इतना क्यों है? मीन ही होता। सबसे नोन है ये मीन, अर्थमेटिक मीन को हम सिंपल मीन भी कहते हैं। तो एक ही होना चाहिए, इतना क्यों है? अब आइए क्वेश्चन कि कब हम कहाँ ये जो मेजर्स हैं इसको कब अप्लाई करेंगे, किस सिचुएशन पे? तो अर्थमेटिक मीन इज यूज्ड फॉर, remember it, ratio scale data. If the data measured on ratio is, then you apply to find the average using arithmetic mean. Is it clear? अगर आपका डेटा जो मेजर्ड है किस पे, रेशियो स्केल पे, हाइट, वेट, मार्क्स, उसका एवरेज फाइंड करने के लिए ऑलवेज यूज अर्थमेटिक मीन। मीडियन, मीडियन इज यूज्ड फॉर ऑर्डिनल स्केल डेटा। याद देखिएगा, अगर डेटा मेजर्ड ऑन ऑर्डिनल स्केल, देन अप्लाई मीडियन। करते हैं कि नहीं? If the data are measured on nominal, then apply nominal scale mod। ठीक है, ये तो तीनों स्केल हो गए। अब यहाँ पर नेक्स्ट इज ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। अगर डेटा परसेंटेज में दिया हुआ और इंक्रीजिंग ऑर्डर में है या रेशियो में है, इफ द डेटा आर गिवन इन परसेंटेज और रेशियो, आइदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर, देन यूज ज्योमेट्रिक मीन। जैसे ग्रोथ रेट, एम्प्लॉयमेंट रेट, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक्स में जो डेटा होते हैं जनरली वहाँ यूज होते हैं ज्योमेट्रिक मीन। कि वहाँ इकोनॉमिक्स के डेटा क्या होते हैं, अगर इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं वहाँ परसेंटेज में रहता है, ग्रोथ रेट, जीडीपी, ये सब क्या परसेंटेज में दिया रहता है, तो वहाँ पे यूज क्या करेंगे, ज्योमेट्रिक मीन। ठीक है, आइदर परसेंटेज, और ये एक्चुअली ये इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिकल डेटा में यूज होता है, गिवन इन परसेंटेज या रेशियो, या उनके ग्राफ इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, तो वहां पर ज्योमेट्रिक मीन अप्लाई करेंगे। हार्मोनिक मीन कहाँ अप्लाई करेंगे? गेस एनीवन? अगर कोई वेरिएबल चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और यू कैन से विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, वन वेरिएबल इज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू अदर वेरिएबल, देन यूज हार्मोनिक मीन। फॉर एग्जाम्पल, हार्मोनिक मीन का कोई एग्जांपल देंगे? यस, एवरेज स्पीड, स्पीड का जो एवरेज निकालते हैं 40 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर, ये जो एवरेज है वो कहाँ से निकालते हैं? अच्छा, मान लीजिए सपोज आपकी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है और 50 किलोमीटर पर आवर, आपकी ये दो स्पीड है, एक स्पीड से आप गए, दूसरे स्पीड से आ गए, एवरेज स्पीड क्या होगी? कैसे निकालेंगे? व्हाट इज योर एवरेज स्पीड? बोथ मीन्स if you sum and divide, then it will be 55 kilometer per hour. No, this is wrong, because you have again used arithmetic mean। बताएंगे कि arithmetic mean क्या ना, sum of number and divided by total number, but I am discussing here, this is the harmonic mean, total time taken, total distance divided by
टोटल टाइम, ये तो होता है। तो ये डिफाइन होगा और ये इसके लिए जो एवरेज यूज़ होगा वो हार्मोनिक मीन, इससे यूज़ करेंगे, नॉट अरिथमेटिक मीन। अगर आप इस तरह से कहते हैं तो ये रॉन्ग आंसर होगा। उसका दूसरा प्रोसेस है, जब आएँगे तो देन वी विल डिस्कस। हुँ? व्हाट? हार्मोनिक? HM? Harmonic? Harmonic means speed. Speed is a variable. You know speed. Speed is a variable. How to define speed? Speed is distance upon time. Speed is nothing but distance and time. Distance is based on time. So here this involves two variables, distance and time. That is why we use, and suppose arithmetic mean of the marks. Marks is one variable, but speed is involve two variables, distance and time. So harmonic mean is used when your variable is changes with respect to other variables, where more than one variables are involved. Speed is a variable, but it involves two more variables, distance and time. Distance and time are also variables. That is why we will use, to find the average, we will use harmonic mean. So speed, average speed can be calculated by harmonic mean, not arithmetic mean. Is it clear? So let us first see arithmetic mean. Yes? What? Okay, first we discuss the arithmetic mean and write in short AM, arithmetic mean. So as you already know, the arithmetic mean is used when the data are measured on ratio scale. So how to find, how to calculate the arithmetic mean is simply, we have two types of data either. Now we will use here the data in terms of discrete and continuous. So because the formula is changed, for discrete case the formula is different, for continuous case the formula is different. So you already know the discrete and continuous. If the individual values is given, that is the discrete, raw data is discrete. If the data are arranged in frequency form and class interval form, then it will be continuous. रब करने में टाइम से, suppose the raw data, suppose the marks of 20 students like this, 6, 7, 8, 5, 9, 10, 12, 15, 16, 8, 9, 5, 12, 8, 6, 9, like this. If you collected the data of the marks of the some students, you will have like this information. So this is the raw data, or you can say the discrete values. If we arrange 6, how many times? How many students? 6, 6, 6. So this is the marks and this is the student. 6. 3 students got the 6 marks. Similarly, 5. Take 5. 2 times. Time. So this form of data is discrete data. And this form of the data is just a frequency.
You cannot say this is the continuous. This is again discrete because the value is also discrete, but it is organized way. This data is given in frequency form. If you write again this data can be written marks and a student. Take marks 0 to 10. How many students who got the marks 0 to 10 means from 0 to 9? How many students? And 10 to 20. 10. Okay, 10, 9, 11 and 10 to 20. Suppose 6. Anyway. So this form of the arrangement, this is continuous. Because here the marks is in the continuous form. And in both the case, this case for this case, the formula will be different, and for this case formula different. So we take discrete for this case and continuous formula for these two cases. फॉर्मूला इन दोनों के लिए सेम होगा, इसके लिए और इसके लिए फॉर्मूला सेम होगा, लेकिन इस दोनों को हम कंटिन्यूअस ऐसे यूज करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली या ये दोनों कंटिन्यूअस नहीं है. ये तो कंटिन्यूअस है लेकिन ये कंटिन्यूअस नहीं है, लेकिन फॉर्मूला इसका और इसका सेम होगा और इसका डिफरेंट होगा, अलग होगा. तो अगर हम डिस्क्रीट की बात करते हैं तो ये बात करेंगे डिस्क्रीट फॉर्मूला के सेंस में. वी आर टॉकिंग द कंटिन्यूअस मीन्स आइदर दिस और दिस. So how to find the formula for arithmetic mean in case of discrete? So first take discrete case. Discrete case. In discrete case, suppose the values is given like this: x1, x2 and xn. ये observation दिया हुआ 6, 7, 8, 9. So we take the marks represented by x. X is nothing but marks of the student. X is the variable that is represent the marks. x1, x2, xn means there is n number of observations. Then arithmetic mean is denoted by x bar. ये सब जानते होंगे ऑलरेडी आप लोग. And x bar arithmetic mean is calculated by the formula written by summation x divided by n, means sum of the observation x1, x2 sum up to xn divided by n. सिंपल फॉर्मूला समेशन एक्स या सिग्मा एक्स भी कहते हैं, लेकिन समेशन एक्स कहें तो बेटर होगा. सिग्मा को दूसरी जगह हम नोटेशन यूज करते हैं. सिग्मा इज ए स्टैंडर्ड डिविएशन. तो दिस इज द केस ऑफ डिस्क्रीट फॉर फाइंडिंग द अर्थमेटिक मीन. सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. For example, marks of 3 students 6, 8 and 10. चलिए 10 हटा दीजिए. 12. The student marks of 3 students 6, 8, 12. Then mean 6 plus 8 plus 12 divided by number of observation 3. So this is the center. You will get a central value. जो भी वैल्यू आपको मिलेगी इसमें वो मैक्सिमम और मिनिमम के बीच की वैल्यू मिलेगी. जैसे इसमें मैक्सिमम कौन सा 12 है, मिनिमम 6 है. मिनिमम और ये मैक्सिमम ऑब्जर्वेशन है. यू विल गेट बिटवीन दिस वट एवर वैल्यू यू विल फाइंड फ्रॉम दिस. कितना होगा इसमें? 6 पॉइंट कुछ तो 8.6 तो देगा सेंटर की वैल्यू.
So this is representative of entire observation, or you can say these three observations. This is the representative of all these three observations. आपके जो टाइम है यहाँ से घर जाने के जो टाइम आप अलग अलग आपके पास टाइम है, इन तीन टाइम की जगह आप क्या यूज कर रहे हैं? ऑलवेज रिप्रेजेंटेटिव, दैट इज ऑब्टेन्ड बाय अर्थमेटिक मीन. Now in case of continuous case, how to find the arithmetic mean in case of continuous? Means data is given in terms of frequency. Data किसका होगा इसमें? Suppose the values is x1, x2 up to xn. This is the values with their frequency f1, f2, fn. Mean x1 is repeated f1 times, x2 is repeated f2 times. Here same thing यहाँ पे ना 6 6 6 6 कितना टाइम्स रिपीट हो रहा है? 3 टाइम. तो कंटिन्यूअस केस में इस तरह से डेटा आपके होंगे. देन यू विल फाइंड द अर्थमेटिक मीन denoted by x bar. This is not, what will you do? Multiplied and sum of fx divided by sum of f. Sum of f actually the total number of observation. अगर यहाँ पर आप इसको ऐड करें तो ये जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा वही होगा. तो उसको समटाइम्स वी डिनोट द सम ऑफ फ्रीक्वेंसी बाय कैपिटल लेटर n. ठीक है. तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या? टोटल ऑब्जर्वेशन. तो इसको जनरली कैपिटल लेटर n से भी डिनोट करते हैं. तो समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय कैपिटल लेटर n. You can find the arithmetic mean in case of continuous data. यहाँ पर जैसा for this example, this is x mean and this is frequency f. ठीक है. यहाँ पर कोई डेटा आपके पास हो 7 2 5 3 1. गंदी take an example of marks and students 2 3 5 6 and 8. There are 4 students who got the marks 2 3 1 2 1. चलिए एक छोटा सा सिंपल एग्जांपल. The data are given in the form of frequency. यहाँ frequency है, then you will use which formula? This formula, frequency वाला formula. तो मार्क्स को डिनोट कर रहे हैं हम x से और फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय f. फॉर्मूला क्या होता है? x बार इज समेशन. देखिए ये क्या है? समेशन एफ एक्स. तो फर्स्ट फाइंड एफ एक्स, सम ऑफ एफ एक्स. तो दिस इज f, दिस इज x, देन वन मोर टेबल and you will get fx. Fx will be what? 4 into 2 8 6 5 12 8 and sum
If you sum this will give you summation fx. What will be this? How much? 39. Okay. And the total capital N is 10. Okay. So just put this value. X bar is 39 divided by 10 means 3.9. This is the average. Arithmetic, using arithmetic mean. Okay. Now some properties of arithmetic mean. Yes. अरे टाइम हो गया क्या? People are saying 10 minutes more. No. Yes. Stop. You have the, the duration of this class is 2 hours. Okay. So now I stop here and we will continue next time. And for this, you must come with some questions, query, confusion, and all your query will be welcome. Okay. Next time you must come with some questions, query. Still, what? Next class. Okay. Okay. Thank you. अरे सर मैं लेट हो गया था. अरे एग्जामिनेशन पीजी डिप्लोमा भी ये कर दिया हॉस्टल में एनवायरमेंटल. ओके. सर पढ़ने के लिए कंटेंट मिल सकता है. बस इससे मैं जरा अब